What a beautiful breeze there is. Vrindavan ko vas bolo. Stay in Vrindavan. Vrindavan ko vas bolo jaha bahe Yamuna Paturani. So Vrindavan is where the Yamuna river is flowing. And we are sitting here. Isn't that so? No one translate. I don't have my radio. It's so beautiful. My whole kurta is wet. All the water that I drank, it's now sweated it out. So I'm sweating now. There are 5 types of practice for Raganuga Bhakti sadhan. Bhavmay sadhan. What is Bhavmay sadhan? Santa, Sakhya, Vatsalya, Madhurya. These 5 moods. We have to take one of these moods. And which mood will you take? You will take the topmost mood. If you say, oh, I'm from Dasya Ras, so how will I take Madhurya Ras? So they say, if you take Madhurya Bhav, the mood of Madhurya, then there's Dasya Bhav, Dasya mood inside Madhurya. So if somebody says, in my soul there is Dasya Ras, and we don't know, but we're doing Madhurya Ras Seva. So don't worry about this. Just as in 100 rupees there is 1 rupee, but in 1 rupee there's not 100 rupees. So what have I said? So if you have a 100 rupees note, you can exchange it into the pennies or the 1 rupee notes, and you can get that. But if you give somebody 1 rupee note, they won't be able to give you 100 rupees. So what is the meaning of this? In Madhurya Ras, it contains all the other rasas. Just as in the ocean, there many rivers meet. So all these rivers meet into the river and are in the ocean, and all these rivers meet into the ocean. But in these rivers don't contain the ocean. Sorry, just go back. क्या पता है 100 रुपया में 1 रुपया 100 का नोट आप दिया, आप एक करके 100 रुपया आप ले सकते हैं। इसके दुकानदार के पास जाओ, भाई हमें 100 रुपया दे रहा हूँ। माधुर्य रस में समस्त रसों की समावेश है। So Madhurya Ras contains all these rasas, just as the ocean contains all the rivers. So the ocean contains the rivers, but the rivers do not contain the ocean. In the same way, if someone takes Madhurya Ras and does bhajan, so when they reach perfection, whatever their actual mood is will manifest. So there's no actual loss in taking the highest ras of Madhurya Ras.
ये जो द्वादश जो रस जो बताया गया, 12 जो So रस बताया गया, these 12 rasas that, ये 5 मुख्य रस so there's 5 primary 7 rasas गौण रस। and 7 इसमें secondary एक रस आपको rasas. लेना पड़ेगा, मुख्य रस में एक लेना You पड़ेगा। have to take one of the primary कौन सा मैं rasas. लूं? So which one मुझे should ये you बात take? कहें, बोले सीधी विचार आप मुख्य रस के लेकर के चलो, So straightforward, just take माधुर्य रस the के लेकर के चलो, Madhurya ras. हैं? आप सर्वोत्तम भाव के लेकर चलो, Take the topmost mood. हैं? वो चलते चलते धीरे धीरे आपके वो प्रकाशित होगा। And as you take this, it will slowly manifest. जार जेई रस सही सर सही रस सार विचारिले आचे तारतम, जिसको जो रस है वही श्रेष्ठ मान जाएगा। So whoever has whichever rasa, तरस्त होइले तरस्त that will be taken as their विचारिले आचे तारतम, mood. तरस्त होकर जब रस विचार करोगे तब तारतम्य दिखाई पड़ेगा। हनुमान So for example, as Hanumanji, who does he think is topmost? He takes Dasiras as topmost. जानकी नाथ अवेद परमात्मनि तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवन। हनुमान जी कहते हैं So Hanumanji says, श्रीनाथ और जानकी नाथ, Srinath and Janaki Nath, so Krishna रामचंद्र and Ramchandra, they have no difference. There's only one Lord, one Bhagavan. भगवान दो नहीं है, There's एक no, ईश्वर है। there are not two Bhagawans. There's only one Lord. और भगवान क्या है? Wait. परमात्मा तत्व है। So Bhagavan is Paramatma Tattva. तत्त्वं जज गणमाद्यम ब्रह्मेति परमाप्ति भगवान इति शब्दते, भगवान एक ही है। So there's one Lord, one Bhagavan, उसे 3 रूप में प्रतीति हो रहा है। but he's represented in three forms, 3 ways. ब्रह्म प्रतीति, So there's Brahma, परमात्मा प्रतीति, Paramatma, भगवत प्रतीति। and Bhagavan, Bhagavad Pratiti. इसे कहते भजन करते करते, So as we do bhajan, आपको जिस रस में वो अपने आप प्रकाशित, whatever rasa you're in, it will manifest. इसलिए हनुमान जी का रसीनाथ है, So Hanumanji is saying, जानकी नाथ है, अवेद परमात्मा तथापि राम कमलोचन मम सर्वस्व जीवन। हनुमान जी कह रहे हैं ये रामचंद्र जो है वही मेरा Hanumanji is saying, Ramchandra सर्वस्व है। is the topmost राम from जी क्या me. बोले? And what's Radhaji saying? तजंतु बंधवा सर्वै निंदस्तु गुरुवो जना तथापि श्याम सुंदर मम सर्वस्व जीवनम। कृष्ण के साथ मैंने प्रेम प्रीति किया, Radhaji is saying, I've loved Krishna. मेरे गुरुजन मुझे त्याग दे, So even if my gurus, they give me up सर्वै निंदस्तु and criticize me, गुरुवो जना, और गुरुजन मुझे निंदा so if my gurus, they criticize me, किंतु तथापि हमारे प्राण प्रियतम गोविंद को मैं त्याग नहीं दे but I cannot give up my सकता। Pran Priyatam Govinda. That's why Vrajvasis say, Gaya Tyago, Bhaiya Tyajo, Maya Tyajo, but Govind ko nahi Tyajo. So we'll give up anything, everybody. मैया त्याजो भैया त्याजो, मैया कहाँ है? Maya, where's Maya? Where's your mother? मैया त्याजो भैया त्याजो, भैया कहाँ है? Where's your brother? मैया त्याजो भैया त्याजो, अरे गोविंद को नहीं त्याजो। So never give up Govinda. राधा जी का Radhaji is saying this. मैया त्याजो भैया त्याजो, गोविंद को नहीं, ब्रजवासी लोग ऐसे
सबको त्याग देने के लिए राजी, किंतु गोविंद So Brajvasis are ready to give up everything, but they won't give up Govinda. एक बार गोविंद में प्रीति लग Just जाता है, if just you अब जहाँ चले गए। obtain priti with Govinda, just one time, so love for Govinda. ये द्वादश रस में कोई एक रस को आपको, So out of these 12 rasas, you will have to take one of the rasas. अभी स्थायी भाव नहीं हो रहा है, किंतु तथापि So Sthai Bhav is not manifested yet. तो चलना पड़ेगा। However, you will have to take one of the rasas and take that for you to do your bhajan. कब आता है? When does Sthai Bhav come? स्थायी भाव आता है अनर्थ निवृत्ति हो So जाने the के fixed बाद में Sthai Bhav comes after Anarth Nivritti. चित्त जब निर्मल होता है, When our heart is purified. ह्लाद केवल संधिनी के ऊपर संवित और ह्लाद That's when upon तब आता है, तब धीरे धीरे Samvit, on Sandhani, Samvit and Haladini come. साई भाव की भी परिभाषा भी बताया। So for Sthai Bhav it is said, समस्त भावों की विरुद्ध अविरुद्ध भावानो, so taking all the moods, विरुद्ध those that are favorable and those that are unfavorable, करके स्वयं राजन विराजयते, राजाधिराज महाराज की भांति, so as a king, अथवा उज्जवल नक्षत्र के भांति जाजल्यमान होकर के रहता है, उसकी साई भाव कहा जाता है। so it will stay fixed. सारे भावों की कोड़ीभूत करके विरुद्ध और So Sthai Bhav, विरुद्ध, कुछ भाव विरुद्ध भाव होता है, so there are some that are favorable and some are unfavorable. कुछ प्रतिकूल भाव होता है, इसे विरुद्ध अविरुद्ध भावानो कोड़ीभूता, माने सबको कोड़ीभूत कर ले। राजेनो राजाधिराज महाराज के भांति उज्जवल नक्षत्र के भांति प्रस्फुटित रहता है, जैसे उत्तर So the king of all kings. ध्रुव नक्षत्र जैसे प्रकाश रहता है। So that's how Sthai Bhav देखा आपने उत्तर दिशा पर remains. जो है So in the northern side, ध्रुव तारा जो है we have the Dhruv star. वो बदलता नहीं, वो It doesn't change. It doesn't change its place. It stays there, the northern star. समझ में आ रही है? Do you understand? दूर क्यों बैठे हैं? सुनने इसलिए कहते हैं विरुद्ध और विरुद्ध भावानो कुरिभूता राजेन प्रकाश, महाराज राधिराज के भांति हो प्रकाशित हो, उसी के कहा जाता है। हाँ पढ़ो। अविरुद्धान विरुद्धान भावान यो भजताम नयन सुराजे विराजित सब भाई भाव भाई भावों की सब प्रोक्ता चित्त विषय रखो। हाँ लास्ट लाइन स्थायी भावोत्र सब प्रोक्ता चित्त विषय रखो। ये स्थायी भाव होता है तब। So this is when Sthai Bhav appears. किंतु पहले क्या होता है? स्थायी Before Sthai Bhav, भाव नहीं आता, किंतु तथापि एक भाव को आपको लेकर के चल रहा है। you still have to take one of the moods and do your bhajan with that. क्या भजन कर रहे हैं? किसके भजन कर रहे हैं? So what bhajan are you भजन doing? कर रहे हैं? You're doing Bhagwanji's bhajan? काली शिव दुर्गा के Or are भजन you कर रहे हैं? doing Kali, Shiv? Whose bhajan are you doing? हैं? कि राधा जी के भजन कर रहे हैं? किसके भजन Or Radha Ji's? Whose bhajan are you कर doing? रहे हो? Radha Ji's.
इसलिए उसमें हमें रखना पड़ता है। So that's why we have to keep this in mind. एक भाव की लेकर दिखाई। You have to take one of the moods. और उसमें हृदय में आपको स्थिर रखना पड़ता है। And we have to keep it will stay steady in the heart. यही भजन करते करते आगे चित्त निर्मल होगा तो प्रकाशित होगा। So as doing bhajan with this fixed mood in the heart, it will manifest. तो एक होता है भावमय साधन का। That's called bhavmay sadhana. भाव संबंध। Then there's bhav sambandh. जो भाव के लेकर के आप साधन कर। The bhav that you are taking and doing your sadhan, your practice, you will have to do that type of mantra jap. You have to chant that particular mantra. Gopal mantra, Kam Gayatri. You will have to chant these mantras. Not that you do Hanuman mantra and Hanuman Chalisa. So Panditji saying there was a person of the village. He didn't know any of the mantras for marriage ceremony, but he wanted to marry his daughter. So they couldn't find a Brahmin. There were so many ceremonies taking place. It's very difficult to get hold of a Brahmin to do the ceremony. So this person said, I've never actually conducted a marriage ceremony. I don't know what the mantras are for a marriage ceremony. He's like, how will you do? He's like, just close your eyes and just do Hanuman Chalisa part. Isn't that good? So Hanumanji, who didn't actually get married, just recite his mantras. This Panditji was saying. So it's like, how do you conduct a marriage ceremony? So the village people, they don't know Sanskrit, so let's just do Hanuman Chalisa part. Let's just recite the Hanuman Chalisa. So speaking this. So village people not bothered about saying, oh, it's okay, the marriage ceremony is done now, it's fine. You have to recite, chant that particular mantra. You have to chant Gopal mantra, Kam Gayatri, to obtain that mood. So this is the practice. So what is favorable for the mood? Following Ekadashi. Putting your tilak on. Nyas mudra. What is the meaning of this tilak? It means the meeting of Smara Yantra, it's called. It's meeting of Radha Govinda. Smara Yantra, it's called.
क्या बताया? It's a reflection of ये हमारी जो है एक Radha and कुंज Govinda के भांति meeting. होता है। आज समझिए, ये कुंज की भांति होता है। So this is like a kunja. उसमें राधा गोविंद की मिलन बताते जाते हैं। So there's a meeting of Radha and Govinda in the kunja. तो ये वाला जो मास्क लगाते हैं ये भी ये कुंज जो होता है, कुंज के ऊपर में जो है The kunj has a lotus flower खिले रहता है। blooming on top. ये जो है उसी प्रकार गंबुज के भांति बता रहे हैं। आज समझिए, Do you understand? जहाँ पर तो उसी प्रकार भावना रखना पड़ेगा। So wherever it is, that's the type of mood we have to take. इसे तिलक की कहा जाता है, स्मरण यंत्र गाता राधा गोविंद की मिलन की कहा जाता So Tilak is called Samaranyantra Radha Govinda, meeting of Radha and Govinda. है। इसलिए इसमें सब भाव उनको उसी प्रकार मंत्र जप आदि, उसी प्रकार भक्तों की संग आदि के द्वारा So taking association of those type of devotees, and these are all the favorable acts, but giving up the unfavorable things. रुक्मिणी ध्यान आदि जो है, So meditating on Rukmini, meditating on Dwarika. Not saying not to go to Dwarika, however, ध्यान आदि जो है to meditate. ये विरुद्ध माना जाता This is against, so this is not for. है। रुक्मिणी आदि की धारणा क्या बोले ये करना, ये हमारे प्रतिकूल हो जाता है। जैसे वो भजन रस ग्रंथ में गुरुदेव उदाहरण दे रहे हैं। So just as कुंड के रहने वाले दो भाई जो है,